सिंधी ॿोली ओताक में तव्हांजो स्वागत आहे। अॼु जे हिन एपिसोड में असां डॉक्टर धरम रामनानी सां ॻाल्हाईंदासीं। असांजी गुफ़्तगू डॉक्टर धरम रामनानी जी ज़िंदगी बाबति, उन्हनि जे प्रोफेशन जे बाबति, संदन पढ़ाई तैलीम ऐं परिवार जे बाबति आहे। डॉक्टर रामनानी पंहिंजी ज़िंदगी जो सफ़र गांधीधाम कच्छ गुजरात में शुरू कयो, इंडिया में, ऐं पढ़ाई कंदे हू अॻियां वधिया, अलॻि अलॻि जॻहियुनि ते पढ़िया, तैलीम प्राप्त कयूं ऐं अॻियां वञी करे मेडिकल डॉक्टर थिया। उनखां पोइ वधीक रिसर्च करण लाइ अमेरिका विया। उन सफ़र में उन्हनि घणो कुझु प्राप्त कयो, पंहिंजी तैलीम, शिक्षा ऐं जीवन में घणो कुझु कमु कयो अथऊं। हिकु मेडिकल साइंटिस्ट हूंदे बि उन्हनि खे पंहिंजो ज्ञान जेको आहे ॿियनि खे ॾियण में मज़ो ईंदो आहे। हू एडुकेशन सां रिलेटेड आहिनि ऐं उन्हनि खे सिंधी ॿोली, सिंधी कल्चर, सिंधी म्यूज़िक, सूफ़ी म्यूज़िक सां बि लॻाव आहे। इन्हनि सभिनी विषयनि जे बारे में असां उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं ऐं सम्झण जी कोशिशि कंदासीं त उन्हनि खे ज़िंदगीअ में किन ॻाल्हियुनि मोटिवेट कयो आहे, प्रेरणा ॾिनी आहे, संदन परिवार जो, माइटनि जो, ॿियनि जो उन में कहिड़ो हिसो रहियो आहे ऐं अॼु हू दुनिया जे सुठे साइंटिस्ट मां हिकु आहिनि ऐं पंहिंजी विद्या जो, पंहिंजी तैलीम जो ऐं पंहिंजे प्रोफेशनल नॉलेज जो हू कहिड़े नमूने सुठो उपयोग करे रहिया आहिनि, उन बाबति बि असां थोरो ॻाल्हाईंदासीं। त अचो, हीअ गुफ़्तगू में तव्हांजो स्वागत आहे ऐं असीं डॉक्टर धरम रामनानी सां ॻाल्हायूं। धरम, वेलकम सिंधी ॿोली ओताका पॉडकास्ट में। डॉक्टर धरम रामनानी, तव्हांजो स्वागत आहे ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी आहे त तव्हां मूंखे हिते US मां जॉइन करे रहिया आहियो। तव्हां पंहिंजे बारे में थोरो ॿुधाईंदा किथे आहियो हिन वक़्तु, ऐं असां वेंदासीं पॉडकास्ट जे जीअं अॻियां हलंदी तव्हांजी जर्नी जे बारे में बि, कीअं तव्हांजो जीवन रहियो आहे ऐं घणेई ॻाल्हियुनि जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं। पर मूंखे ख़बर आहे तव्हांखे हिकु पर्टिकुलर शौक़ु आहे, पैशन आहे सिंधी म्यूज़िक जे बारे में, सिंधी कल्चर जे बारे में, त उहो बि पाण ॻाल्हाईंदासीं। पर शुरू कयूं था असांजे ॿुधंदड़नि जे लाइ, तव्हां जेकॾहिं ॿुधंदड़नि ऐं ॾिसंदड़नि लाइ जेकॾहिं पंहिंजे बारे में थोरो ॿुधायो। डॉक्टर धरम, तव्हां किथे वॾा थिया, तव्हांजी तालीम ऐं ॿियो प्रोफेशनल जर्नी कीअं रही, हिन वक़्तु तव्हां किथे आहियो ऐं शुरू में किथां आया, ऐं फील फ्री सिंधीअ में ॻाल्हायो त सुठो, पर जेतिरो बि सिंधीअ में ॻाल्हायो या अंग्रेज़ीअ में, ॿुधंदड़ ॾिसंदड़ आई एम श्योर अप्रिशिएट कंदा जेका बि ॿई तव्हां भाषा वापरींदा। त डॉक्टर धरम, ॿुधायो। सभिनी खां पहिरियों ॾाढी ख़ुशी थी थिए मूंखे तव्हां सां ॻाल्हाइण वक़्तु हीअ, एंड थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक यू टू योर लिसनर्स ऑल्सो फॉर वॉचिंग दिस। त मां गांधीधाम में पैदा थियुमि, गांधीधाम में वॾो थियुमि। SSC करण खां पोइ घर मां निकितमि, 2 साल वल्लभ विद्यानगर में हायर सेकेंडरी कई, उनखां पोइ मेडिकल स्कूल कयो, एंड उनखां पोइ मुंहिंजो वीचार हो शुरूअ खां ई कि मां MBBS करे इंडिया मां ॿाहिरि निकिरां फॉर फर्दर स्टडीज़। त उहो मां पहिरियों यूरोप वञण जो सोचियो, पर देयर वाज़ अ लैंग्वेज बैरियर, त आई एंडेड अप कमिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा। त उते 1989 में आयुमि US में, त लॻभॻि 35-36 इयर्स थिया आहिनि। 36 साल थी विया बराबर। हा। त पहिरियां 4 साल रिसर्च कई मां, उनखां पोइ मां हिते MD पैथोलॉजी जेका हिते रेजिडेंसी हूंदी आहे उहा पूरी कई। अच्छा। उनखां पोइ 2 फेलोशिप कयूं। अच्छा। उहो सभु ट्रेनिंग ख़तमु करण खां पोइ मां आई एम रिचमंड में, एंड आई विल टेल यू मोर अबाउट माय जर्नी थ्रू वेरियस प्लेसेस इन द US। पोइ फाइनली रिचमंड में आयुमि 99 में, ऐं रिचमंड में आया हाणे रिचमंड वर्जीनिया में। अच्छा। रिचमंड इज़ द कैपिटल ऑफ वर्जीनिया, ऐं वॉशिंगटन DC खां लॻभॻि 100 माइल्स साउथ आहे, मतिलबु लॻभॻि 1.5-2 कलाक जो रस्तो आहे बाय रोड। अच्छा। एंड त रिचमंड में आया ऐं आई एम वर्किंग इन प्राइवेट प्रैक्टिस, पर मुंहिंजो एजुकेशन में काफ़ी वॾो इन्वॉल्वमेंट आहे। हिते जेके लोकल कॉलेजिस आहिनि, स्कूल्स आहिनि, यूनिवर्सिटीज़ आहिनि, उन्हनि सां मुंहिंजो काफ़ी कोलैबोरेशन बि आहे। त आई एम परस्यूइंग अ जॉइंट प्राइवेट प्रैक्टिस एज वेल एज एन एकेडमिक It's a twin track professional journey, private practice medical में ऐं एजुकेशन सां बि वास्तो आहे, तमामु सुठो। तव्हां गांधीधाम में वॾा थिया,
त उते जो माहौल कीअं हो जॾहिं when you were growing up गांधीधाम में उहो early 80s ऐं 70s 80s जी ॻाल्हि थी वई हीअ माना त गांधीधाम त ठहियो ई सिंधियुनि जे लाइ हो हूअं हाणे त मिक्स थी विया आहिनि सुठी ॻाल्हि आहे तमामु पर उन वक़्तु माहौल कीअं हो तव्हांजे स्कूल्स जो या परिवार जो कहिड़े नमूने तव्हांजो एक्सपीरियंस रहियो हा त गांधीधाम नंढो शहर हो हुन टाइम ते काफ़ी नंढो शहर हो ऐं पॉपुलेशन बि नंढी हुई एंड लॻभॻि सभई माण्हू हिकु ॿिनि खे सुञाणींदा हुआ Sindhi families knew each other on first name basis ऐं ॿिया नॉन सिंधीज़ बि हुआ पर घटि हुआ नंढो शहर हो ॾाढो साफ़ सुथरो शांति हूंदो हो हाणे मां रिसेंटली गांधीधाम वियो हुअमि 2 साल पहिरीं त मूंखे त सम्झ में ई न पियो अचे कि केतिरो वॾो थी वियो आहे I could not find my way around the place. Yes. And obviously with development, it has become more congested, yes. Which is natural. Yes. पर नंढो शहर हो ऐं ॾाढो शांत शहर हो ऐं सुठी जॻह हुई and I had a wonderful time growing up as a child. ॾाढियूं fond memories आहिनि गांधीधाम जूं with my कुझु family. recount कंदा उहे memories कहिड़ियूं हुयूं? Ha, actually one of the best memories and which actually influenced my earlier interest in life and even to this day. गांधीधाम में उन टाइम ते पावर आउटेजेस काफ़ी थींदा हुआ ब्लैकआउट्स थींदा हुआ जी थोड़ी बि हवा लॻे या बरसाति अचे त लाइट बंदि थी वञे पावर हली वञे त हिकदमि ऊंदहि एंड पोइ इन टाइम ते one of my fondest memories was my father would take us all out on the street and we would look up in the sky and look at the Milky Way, look at the stars, look at the planets. Wow. And मुझे father के काफ़ी knowledge हो उनके बारे में that he would show us different planets, he would show us different constellations. त उन जे करे मुंहिंजो पहिरियों interest हो astronomy में. Actually, I wanted to become an astrophysicist. All right. मुंहिंजो medicine में कोई शौक़ न हो शुरुआत में. अच्छा. हाँ मां साइंसिस में होशियार हुअमि मैथ में होशियार हुअमि पर मुंहिंजो इंट्रेस्ट हो फिजिक्स में एस्ट्रोफिजिक्स में अच्छा मूंखे थियणो हो एस्ट्रोनॉमर या एस्ट्रोफिजिसिस्ट and that was traced to my initial exposure to the skies, watching the Milky Way, watching planets, watching galaxies. Yeah, and the sky looks beautiful from Kutch. And it's been a long time since I've again looked up in the sky. Because when you live in a city, light pollution में तो वो मज़ो नहीं आता। It's not curious आहे ये मुझे लाए दिगारे खुशी भी थी थे तमाम है उन्हें अब कारण है एक तो ताने father जो knowledge tell me a little about your father what was he and what made him so knowledgeable about this thing and then I'll tell you my side. Yeah. तो मुझे father actually by profession civil engineer हुआ. Okay. And he was, I think, if I'm not mistaken, he was the first engineer in his family and he was the first one to go and get a degree, professional degree in his family on his side. Achha. And because he was born in Sindh at that time, the उन ज़माने में पढ़ाई जो थोड़ो घटि हूंदो हो शायद, he was the first one in his family to get a proper education. He was a civil engineer, पर उन्हनि खे electronics में, sciences में, astronomy में काफ़ी knowledge हुअनि. Especially electronics maybe. And he was a strong believer in education. As in fact, Sanjay घर में we are 3 brothers and 3 sisters. We are a large family, and everybody has had at least postgraduate education. Every one of the children. He was a wonderful person. One of the biggest influences in my life. He was the one who pushed us all into excelling ourselves, going for higher education, aiming very high, and not worrying about where we end up, but at least giving it a try. Okay, त वो माना father जो ॾाढो influence रहियो एक किस्म जी upbringing हुई जंहिंमें तालीम जो शिक्षा जो ॾाढो महत्व हुयो ऐं just to complete briefly astrophysics astronomy जे interest जे बारे में मुंहिंजो पुटु जेको आहे दर्श कोडवाणी उहो astrophysicist आहे अरे वाह वो proper theoretical physics में PhD कई हुन त when he was going to school he was also changing mindset छा करणो छा न करणो but ultimately हुन में नक्की कई ऐं पोइ he did a PhD so I'll park it there just it's not about my family but it's about we want to know more about you so from astronomy astrophysics interest how did it end up being medical?
त छा थियो की हायर सेकेंडरी खां पोइ जॾहिं टाइम ईंदो आहे डिसाइड करण जो की कहिड़ी जी ब्रांच में कॉलेज वञिजे जी त मूंखे मेडिसिन में कोई शौक़ु या इच्छा न हुई एतिरी. Even though my older sister, one of my sisters, is a physician in Baroda में ही है न, ऐं उते अच्छा actually she has been there for almost 50 years now. अच्छा हा त उनजो थोरो इन्फ्लुएंस हो त मूंखे कॾहिं कॾहिं इच्छा थींदी हुई की शायदि मां बि डॉक्टर थी वञा, पर वधीक इंटरेस्ट कान हो. मूंखे वञिणो हो फिजिक्स में, पर मुंहिंजे फादर you know how it is in those days in the family, your parents decide what you're going to do or what you're going to become, जी and you don't have a big say, at least in those days. यस The same thing happened here. He said, go into medicine, help people, and also have a good life, helping others. And you can always pursue astronomy as a hobby. Nobody's going to stop you if you have your telescope and look at skies in the night. सही सही But हाँ so that is how I ended up getting into medicine. But I will tell you, I have not regretted one day what was decided for me as a career choice. I have enjoyed thoroughly what I have become and the journey that I have had to undertake. And I think he is right to an extent. I still have continued. मुंहिंजी जेका हॉबी आहे एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स में जी उहो मां चालू रखी आहे. हिते रिचमंड में वर्जीनिया में लोकल एस्ट्रोनॉमी क्लब आहे, मां हुन में मेंबर आहियां. तमाम त every month once we collect in the science museum in the city, and we talk about topics of interest. And they इन्हनि जो हिकिड़ो लोकेशन बि आहे outside the city limits where they have a telescope. त उते वञी करे we look at skies, we look at galaxies, nebulas. तमाम सुठो So I'm able to pursue both careers, so to speak. careers yeah it's best of both worlds in a way you got intellectually. It is amazing छाकाणि त मां कुझु वक़्तु गांधीधाम में कमु कयो हो ऐं मुंहिंजी ॾाढी मां ख़ुदि साइंटिस्ट न आहियां इन हिसाब सां आई एम डॉक्टर बट नॉट असली डॉक्टर तव्हां वांगुरु PhD वारो डॉक्टर आहियां. त मां उते काफ़ी कोशिशि कई साइंस में रुचि ॿारनि जी वधे त उते काफ़ी मां महिनत कई हुई. आदिपुर गांधीधाम में स्कूल्स में साइंस जा एग्ज़ाम्स वग़ैरह ॾियारींदो हुउसि, कॉम्पिटिशन्स नेशनल लेवल वग़ैरह जा. त हिकु तमामु ज़रूरी आहे ऐं मुंहिंजे हिसाब सां अॼु बि भारत में साइंस जी तालीम जो अहमियत तमामु घणी आहे. मुंहिंजे हिसाब सां मूंखे केॾी महिल अफ़सोस थींदो आहे त घटि ॿार हिन वक़्तु साइंस पढ़ी रहिया आहिनि स्कूलनि में जेतिरी ज़रूरत आहे उन खां प्योर साइंसिस ख़ासि करे. पर उहो ख़ैर ॿियो विषय थी वेंदो. त हाणे वापसि तव्हांजे इन्फ्लुएंसिस में सो हिकु फादर जो ऐं हिकु हालात अहिड़ी हुई जंहिंजे करे तव्हांखे स्काई ॾिसण जी इच्छा थी, एस्ट्रोनॉमी, पोइ वरी मेडिकल, एनी अदर इन्फ्लुएंसिस और एनी अदर models, role models? मुंहिंजा जेके siblings आहिनि, so I am the youngest of the six. अच्छा जेके मुंहिंजा वॾा भाउर भेनर आहिनि, they always had a very protective attitude towards me being the youngest in the family. त उन्हनि जा बि घणा influences आहिनि. मुंहिंजो हिकिड़ो भाउ इंजीनियर आहे, ॿियो भाउ फिजिक्स में हो. मुंहिंजूं ॿई सिस्टर्स MSc कयूं, हिकिड़ी सिस्टर फिजिशियन आहे. त उन्हनि जा इन्फ्लुएंसिस बि काफ़ी घणा रहिया आहिनि. स्पेशली जेका फिजिशियन आहे सिस्टर मुंहिंजी जेका बड़ौदा में आहे, उन्हनि जो काफ़ी इन्फ्लुएंस रहियो आहे. मुंहिंजो साइंसिस में इंट्रस्ट हो त शी ऑलवेज एनकरेज्ड एंड प्रमोटेड माई इंट्रस्ट. त उन्हनि जे करे I have had a very supportive and caring family environment, which helped me, excel in studies in school. And at higher levels. Yeah. तमाम सुठो. माना हिन में other thing I remark is that तव्हांजी जेके sisters आहिनि, girls in the family also got equal importance in education, which says a lot about your parents. तव्हांजे parents जे लाइ तमामु घणो कुझु. Definitely. Ladies जी छोकरनि जी पढ़ाई तालीम उन वक़्तु बि उन्हनि एॾी अहमियत ॾिनी जो तव्हांजी सिस्टर तव्हां खां एल्डर हूंदे बि उन डॉक्टरी वग़ैरह पढ़ी ऐं ॿियनि सिस्टर्स बि पढ़ाई कई. Yeah. Which is good. Among Sindhis, it is very nice to know. Yeah. And I think these days, of course, it is not uncommon at all. But in those days, it was something of a novel thing. Yeah. It is very, very remarkable parents' side में तव्हांजे. त हाणे असां सिंधी कल्चर जे बारे में ॻाल्हायूं थोरो. त हिकिड़ो दयाराम गिदुमल करे हिकिड़ो वॾी पर्सनालिटी सिंध में हुई. उहो जज हुआ ऐं काफ़ी उन्हनि कमु कयो सिंध में, ख़ासि करे विमेन एम्पावरमेंट ते ऐं एडुकेशन ते बि.
उन्हनि जो हिकिड़ो किताबु लिखियलु आहे साधू हीरानंद ते, हीरानंद द सोल अच्छा ऑफ सिंध. Hiranand was a great Sindhi man. Again, he had a very good family upbringing in 19th century जॾहिं हू सिंध में हो. त उन जी लाइफ जे बारे में उन्हनि लिखियो आहे. त उन में हिकिड़ो उन्हनि सेंटेंस लिखियो आहे, द होल ऑफ सिंधी कल्चर may be summed up in the words, music and song, and the whole of Sindhi literature in the anthology of Sufism. त मां इहो कंहिं जॻह ते कोट हिन वक़्तु रखियो पंहिंजे कंहिं टॉक में, त it reminded me of this quote when you said you are interested in Sindhi music ऐं उहो तव्हांजो yes पैशन आहे. ha ha ऐं त it is very nice to know, छाकाणि ॾाढा घटि मां ॾिठा आहिनि सिंधी जेके जंहिं हिसाब सां you will tell us now more about so that listeners appreciate कंदा त मां छो इहो सुवाल तव्हां खां पुछां थो. ha त पंहिंजो ha सिंधी म्यूज़िक जे बारे में तव्हांखे जेको इंट्रस्ट आहे, तव्हां उन बारे में जेको कमु कयो आहे या शौक़ु रखो था, उन जे ha बारे में थोरो ॿुधायो असांखे. ha ha again it goes back to my upbringing in Gandhidham. The un time te Gandhidham mein we were able to watch television programs broadcast from Karachi. अच्छा, कच्छ पाकिस्तान जे पासे में आहे. बिल्कुलु. त कराची जा जेके टीवी प्रोग्राम्स आहिनि उन टाइम ते त केबल ऐं चैनल्स ऐं यूट्यूब ऐं इंटरनेट त हो कान. न वॾा एंटेना लॻाईंदा हुआसीं. वॾी एंटेना लॻाईंदा हुआसीं. त बिकॉज़ ऑफ माय डैड्स इंट्रस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स असां वटि उन टाइम ते टीवी हो हिकिड़ो, which was again a novel thing to have a television in those days at home. Yeah. Black and white ho, but Yeah. it was a good one. Anyway, we grew up watching Sindhi programs broadcast from Karachi television, Pakistan television. They used to show a lot of Sindhi folk music. Unhanja jeke fakir and names like Alan Fakir, Sorab Fakir, Usman Fakir Solangi, Muhammad Ibrahim, Muhammad Juman. Unhanja jeke programs hunda wa uwe dekharinda wa kafi frequently. I remember my dad, because of his origin in Sindh from those days, उन्हनि खे बि ॾाढो शौक़ु हो सिंधी ऐं सूफ़ी म्यूज़िक जो, त we used to sit with him and watch those programs. त उन जे करे मुंहिंजो इंट्रस्ट थियो, and I really enjoyed watching the program. So it was not only just the program itself, but also the fact that we were watching as a family with him. त उहे जेके मुंहिंजी मेमोरीज़ आहिनि उहे अञा ताईं काफ़ी स्ट्रॉन्ग आहिनि. त उन जे करे मुंहिंजो जेको इंट्रस्ट आहे सिंधी म्यूज़िक में उहो चालू ई रहियो आहे. And then in addition to that, there were some Indian artists. हिकिड़ा बॉम्बे में हुआ महाराज चिमन लाल. अच्छा, महाराज चिमन त लाल. उहे सिंधी भगत ऐं सिंधी सूफ़ी म्यूज़िक में काफ़ी पहुचल हुआ. ॾाढो सुठो मिठो आवाज़ हुननि जो. त उहे ईंदा हुआ गांधीधाम, साल में अचनि हिकु ॿ दफ़ा. त हुते लोकल उन्हनि जो हिकिड़ो हुअनि पैट्रन, उन्हनि जे घर अची रहनि 3-4 ॾींहं, and then he would do the bhajans in the evening. Acha, and my father, being knowledgeable in electronics, he would go there and record those programs for the host and for the audience. The उहे recordings जेके हुयूं उहे मुंहिंजे father वटि हुयूं, उहे actually now they are with me. अच्छा. त उहे original recordings महाराज चिमन लाल जा जेके भजन आहिनि, I still listen to them to this day. The exposure to music because of my father's interest, that was the big influence and is the reason why I am interested in Sindhi music. Yeah, and you continue to collect lot of songs. हाणे त digital format में भी आहिनि and try to promote it through a YouTube kind of a thing. You created. हाँ, मुझे actually plan आहे time कढी करे मूंखे ये recordings digitize करे YouTube ते रखणियूं आहिनि. Actually, I have put a couple of them, but I still have a lot more. नकी गंगा न गोदरी नको जग जहार नको जिक्री नको फिक्री बेदी नको सद तवार नका रात न दी को नका जीत नहार. Many hours of music and recordings from Maharaj Chiman Lal and others that I want to upload to YouTube, hopefully in the near future.
Very nice. We look forward to that. छाकाणि त ही हिकु वरसो आहे, हेरिटेज आहे सिंधी कल्चर जो, ऐं जेतिरो वधीक माण्हुनि ताईं पहुची सघे तमामु सुठी ॻाल्हि आहे. पर पर्सनली म्यूज़िक can be very satisfying. It can be a very soothing experience. ऐं ख़ासि करे पंहिंजी ॿोलीअ में माण्हू म्यूज़िक ॿुधे थो त उन जो कुझु आनंद ई ॿियो आहे. ऐं मां एक्चुअली मुंहिंजो we'll talk about my work a little bit later. पर मुंहिंजो जेको कमु आहे उहो मां जॾहिं कंदो आहियां माइक्रोस्कोप ते स्लाइड्स ॾिसंदो आहियां त it is actually it can become tedious sometimes, the nature of my work. The music helps me get through the day. वो background में music चालू ही रहंदो आहे. त कॾहिं कॾहिं सिंधी सूफ़ी म्यूज़िक हुजे, कॾहिं इंडियन क्लासिकल वोकल हुजे या इंस्ट्रूमेंटल हुजे. Sometimes I even play Western classical or jazz at low volume in the background to kind of help me get through my day at work. Yes, I mean, चवंदा आहिनि भाई म्यूज़िक हिकु हिकिड़ो अहिड़ो एक्सपीरियंस आहे माइंड जे लाइ, ब्रेन जे लाइ ख़ासि करे, जेको एक्टिवेट थो करे different parts of the brain. ऐं छाकाणि त your day job is focusing on a detail. Microscope में ॾिसण ऐं तमामु it requires a precision and observation has to be very focused. You know, you are a scientist, I am not, but you would know still that there is a brain जा ॿ हिस्सा आहिनि, left hemisphere and right hemisphere. त चवंदा आहिनि भाई लेफ्ट हेमिस्फेयर इज़ मोर फॉर ज़ूमिंग इन, फोकस करण लाइ आहे, डिटेल में वञिणो आहे, एनालाइज़ करणो आहे, ओॾी महिल लेफ्ट हेमिस्फेयर वधीक एक्टिवेट थी वेंदो आहे. ऐं एक्सपीरियंस लाइक व्यूइंग स्काई और गार्डन और नेचर और लिसनिंग टू म्यूज़िक जेको आहे उहो राइट हेमिस्फेयर खे एक्टिवेट कंदो आहे. सो प्रोबेबली यू आर हैविंग दैट वेरी बैलेंस्ड एक्सपीरियंस ऑन द जॉब. And music is also about creativity. It's a creative expression of real sentiments, passion and emotions. जेको असांजी सिंधी ॿोली में सूफ़िज़म आहे, जे शाह जो रसालो पढ़ो या सचल जो या सामीअ जो, भले उन्हनि में हिकु पंहिंजी क़िस्म जो मैसेज आहे, पर ॿिए तरफ़ हुन में उहे लिरिक्स जेके आहिनि, वर्सिस जेके आहिनि, बैत जेके आहिनि, उन्हनि में हिकु पंहिंजो पाण में म्यूज़िक आहे. शाह जो रसालो त सॼो ठहियल ई म्यूज़िक ते आहे. उन जा जेके बि आहिनि पोएम्स, दे आर डिवाइडेड ऑन द राग जेके थींदा आहिनि. भई पहिरियों राग आहे सुर कल्याण, पोइ वरी यमन कल्याण, अहिड़े नमूने सुर सामुंडी, त उन जो सॼो कलाम ई विरायो वियो आहे म्यूज़िकल नोट्स ते. ऐं तव्हां जेकर इहे जेके सूफ़ी सॉन्ग्स आहिनि उन्हनि खे तव्हां ध्यान सां ॿुधो ऐं वर्ड्स जी मीनिंग ते ध्यानु ॾियो त इट कैन बी वेरी इमोशनल एक्सपीरियंस टू. इट इज़ वेरी मीनिंगफुल एंड वेरी इमोशनल. ऐं मां कॾहिं कॾहिं हिनखे साइको एनालिटिकल पॉइंट सां बि फील कंदो आहियां, सम्झण जी कोशिशि कंदो आहियां त हिन में एॾो इमोशन छो विझंदा हुआ. छाकाणि त असांजो ओल्डेस्ट जेको ब्रेन जो हिसो आहे, लिम्बिक सिस्टम, उहो इमोशनल रिस्पॉन्स ई कंदो आहे. त जेको पोएट्री में इमोशन अचे थो त उहो जल्दी असांखे असर थो करे, छाकाणि त इट एक्टिवेट्स द इमोशनल पार्ट ऑफ द माइंड, इज़न्ट इट? तमामु सुठो. सो हाणे साइंस जे बारे में थोरो ॻाल्हायूं. तव्हां साइंटिस्ट आहियो. सो आफ्टर मेडिकल, रादर देन प्रैक्टिसिंग, यू वेंट फर्दर एंड डिड MD मास्टर्स इन पैथोलॉजी. ही त हिकु क़िस्म जो वॾो कमु आहे, स्पेशलाइज़ेशन आहे पैथोलॉजिकल साइंसिस. त आर देयर एनी स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ डिजीज़िस दैट यू एनालाइज़? कोई बि क़िस्म जो पैथोलॉजिकल वर्क कंदा आहियो, उन जे बारे में थोरो ॿुधायो. ऐं तव्हां लिखिया बि आहिनि, रिसर्च पेपर्स बि लिखिया आहिनि तव्हां घणा कुझु. त MBBS ख़तमु कई इंडिया में. उन खां पोइ मुंहिंजो प्रैक्टिस करण जो इच्छा घटि हुई. आई वॉन्टेड टू गो इनटू रिसर्च. भई मूंखे MBBS खां पोइ भई मां क्लिनिक ठाहियां पंहिंजी ऐं पेशेंट्स वेही ॾिसां, उहो मुंहिंजो इंट्रस्ट कान हो. मुंहिंजो इंट्रस्ट हो लैबोरेटरी में ऐं रिसर्च में. त इन जे करे मां पोइ आयसि यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा इन 1989. उते मां 4 साल यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में मोलिकुलर बायोलॉजी डिपार्टमेंट में रिसर्च कई. ऐं उन खां पोइ मां वियुसि टेक्सस डैलस में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सस साउथ वेस्टर्न मेडिकल सेंटर. उते मां MD पैथोलॉजी कई. ऐं ना पैथोलॉजी मां इन करे चूज़ कई छाकाणि त इट इज़ एट अ गुड इंटरसेक्शन बिटवीन मेडिसिन एंड रिसर्च. The pathology may you are still connected to the medical field, you are still dealing with specimens from real human patients, but there are ample opportunities for doing research also. त वो मां पैथोलॉजी कई हुन में डैलस में 4 साल. उन खां पोइ फेलोशिप कई सर्जिकल पैथोलॉजी में.
and I focused on basically diagnosis of tumors. अच्छा त जेके बि सपोज कंहिंखे बि कुझु लंप हुजे या लीजन हुजे उनजी बायोप्सी थिए त जेको टिश्यू स्पेसिमेन कढंदा आहिनि बायोप्सी में ईदर बाय नीडल बायोप्सी और एन ओपन बायोप्सी उहो जेको टिश्यू स्पेसिमेन आहे उनखे एनालाइज़ कंदा आहिनि लैबोरेटरी में उनखे केमिकल्स में प्रोसेस करे उन जूं पोइ स्लाइड्स ठाहींदा आहिनि ऐं पोइ स्लाइड्स ठाहे उनखे माइक्रोस्कोप में ॾिसंदा आहिनि की हुन में नॉर्मल सेल्स आहिनि या कैंसर आहे and suppose cancer diagnosed there, then you have to characterize the cancer further, depending upon the type of cancer, the grade of cancer, how aggressive this cancer is likely to be, so that you can direct the treatment appropriately. I specialized in surgical pathology aspect. Pathology काफी बड़ी field है. उनमें there is, for example, blood sample, analysis, urine sample, stool sample. There are like at least 15, 17 different subspecialties within the field of pathology. It's a pretty broad aspect, covers, touches every aspect of medicine. So surgical pathology is a smaller but important area. So I specialized in that. And then मुंहिंजो जेको last year of training जो उनजे करे मां वियमि Mayo Clinic में Minnesota में. अच्छा. ऐं उते मां further specialize कयो in the diagnosis and research of tumors and cancer of prostate, bladder, and kidney. अच्छा. So वो field है urologic pathology. The urologic organs हैं जेके prostate, bladder, kidney, and testis. त उन्हनि जा जेके tumors and cancers हैं मां उन में specialize कयो. Okay. So I am practicing currently as a urologic pathologist with a focus on diagnosis and management of cancers of prostate, bladder, kidney, and testis. अच्छा तो वो माने तव्हांखे हॉस्पिटल्स केसेस रेफर कंदी हूंदी तव्हां पोइ उन्हनि खे एनालाइज़ कंदा आहियो या डायरेक्टली पेशेंट्स सां वठी ईंदा आहिनि त एक्चुअली मां हिकिड़े ग्रुप में पार्टनर आहियां त उहो ग्रुप आहे यूरोलॉजी ग्रुप असांजे ग्रुप में देयर आर 34 यूरोलॉजिस्ट काफ़ी वॾो ग्रुप आहे अच्छा we serve the central Virginia, जेको असांजो वर्जीनिया स्टेट आहे, the central Virginia area we serve. We see patients from not only Richmond area but surrounding communities also. I am working with the group, पर असां वटि hospital मां बि cases ईंदा आहिनि. पर असांजे group में there are enough patients that I get to see a lot of prostate and bladder specimens every day. And prostate cancer and bladder cancer are the two main areas of interest and focus in my daily work. And my research also revolves around those two. अच्छा थोरो रिसर्च में बारे में पर मां मेंशन पियो करण चाहियां त मां हिकिड़ो पॉडकास्ट कयो प्रोफेसर पोपटाणी सां हरीश पोपटाणी सां जेको लिवरपूल यूनिवर्सिटी यूके में प्रोफेसर आहे हा मां ॾिठो रिसेंटली हा त उन जो बि सिमिलर टाइप जो कमु आहे पर उहो MRI ऐं FMRI कंदा आहिनि ऐं ब्रेन जे पर्टिकुलर ट्यूमर्स ते रिसर्च कंदा आहिनि बराबर बराबर I saw the podcast recently. Yes, so it is very nice to see छाकाणि त ही life-saving research आहे. It helps people to get treatment जेका सही आहे उन्हनि जे लाइ ऐं you save life through the diagnostics that you provide. ऐं ॾाढो नोबल प्रोफेशन आहे मां कल्ह ई असांजे हिकिड़े शहर में हिकिड़े त सर्जन आहे जिते मां रहंदो आहियां इंग्लैंड में उहो ॿुधाए पियो त हिन में बि काफ़ी डेवलपमेंट थी आहे भई पहिरीं चवंदा भई 1 mm जो बि ट्यूमर डिटेक्ट करण में ॾुखियाई थींदी हाणे चए पियो भई असां 0.7 mm जो बि डिटेक्ट था थी वञनि पिया अहिड़ा इंस्ट्रूमेंट्स ठहिया आहिनि ऐं उनखे पोइ कैरेक्टराइज़ करे था सघनि पिया in fact that is so true हाणे अॼुकल्ह प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोसिस में MRI जो ॾाढो वॾो रोल थी वियो आहे पहिरियों छा थींदो हो प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट करण लाइ हिकिड़ी ब्लड टेस्ट आहे PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन त उहो PSA ब्लड टेस्ट कंदा हुआ ऐं जेकर उनजी लेवल हाई अचे त they would recommend a biopsy के ॾिसूं भई the PSA is high because of some other cause or it is because of cancer. But अॼुकल्ह prostate MRI is becoming one of the first steps to see if there is any cancer there or not. And prostate MRI ॾाढी sensitive and specific test आहे to detect clinically significant prostate cancers. हाणे prostate cancer में एतिरी heterogeneity आहे कि सभई prostate cancers जेके आहिनि they are not all aggressive.
बराबर. Many of them just stay there, don't do anything to the patient, and there actually may be no treatment required. There is something called active surveillance or watchful waiting. Prostate cancer की diagnosis थी वने, based on certain criteria, you decide, okay, this is not an aggressive cancer and is not likely to cause problems. We are just going to watch it. अच्छा. And they periodically will monitor via PSA or by prostate MRI. But a prostate MRI has made a big impact because it is helpful in deciding which cancers are clinically significant and are likely to progress and therefore require treatment now versus the ones that are less likely to be aggressive and can be managed simply by watchful waiting. So you talked about MRI with Professor Poptani. So I'm just saying that MRI has made a huge Very impact nice. Very in the nice. management of prostate cancers. हाँ, त हाणे जेको इहो कैंसर जेकॾहिं सम्झो इफ इट इज़ उन जो तव्हांजो डायग्नोसिस चए थो भई हिन जी ट्रीटमेंट करणी आहे, त हाउ गुड इज़ नाउ ट्रीटमेंट ऑप्शन जेको आहे प्रोस्टेट कैंसर जो? अॻ में चवंदा हुआ भई ॾाढो लीथल आहे, फैटेलिटी रेट तमामु घणो हूंदो, हाणे कुझु हुन में फ़र्क़ु पियो आहे ट्रीटमेंट जे ऑप्शंस में? The prostate cancer में भी अलग-अलग grades हूंदा आहिनि. Not all prostate cancers are aggressive. उनजो जेको grading system आहे, त उनमें जेके high grade tumors आहिनि, obviously, and they make up about 15 to 20% of all prostate cancers. The majority of the prostate cancers are not highly aggressive, and they can be managed by a combination of watchful waiting or maybe surgery or radiation. And they are not the kind that would be lethal in the end. But about 15 to 20% of cases are highly aggressive and they have to be managed. But a prostate cancer field there has been tremendous progress in the last 10 to 12 years. And there are many more options, especially for the aggressive tumors, so that previously what was literally a death sentence now can be managed, and it can be managed more like a chronic disease. The उनमें काफी advances थे in immunotherapy, targeted therapies, and a lot of this has come after the advances made in the understanding of the genetic makeup of these tumors. उनजा जेके कहिड़ा genes mutated and prostate cancers में उनजे basis ते they have come up with targeted therapies, and that has made a huge impact in the management. हाणे आम माण्हू जीअं मां आहियां, मां डॉक्टर न आहियां, तव्हां सम्झो कोई सम्झणु चाहे भई मुख्य कारण छा थींदो आहे इन क़िस्म जी कैंसर जो, ऐं उनजो कुझु अहिड़ो असांजे लाइफ स्टाइल में अहिड़ी कुझु थींदियूं आहिनि जेके ध्यानु रखण सां चांसिस घटि थियनि इनखे सम्झा? त basically cancer जो origin is common irrespective of the type of cancer. Every cancer starts with a mutation in some gene. Now, the type of genes or the specific genes involved are different in different cancers. So prostate cancer has its own set of genes that are likely to be mutated or involved. This has come to us after studying the genetic makeup of various tumors. Now, why these mutations happen, we don't precisely know, but obviously there are some hereditary influences as well as some environmental influences. So like most other cancers, our environment, specifically our lifestyle, the diet we eat, has a huge impact on this. So the factors are pretty much common across the spectrum. So what we eat, how physically active we are, they all play a role. They play a role. People like me who have to sit all the time on chair, it's a risky lifestyle, isn't it? That is, I think they say that sitting in chair all day long is the new smoking. The risk factors that were linked to smoking in the earlier days, they are associating similar risk factors to the sedentary lifestyle or sitting in chair all day, especially some of us who have the kind of jobs that require sitting at a computer monitor. Yeah, get up every now and then and just walk about a little bit. Yes. So this is so helpful. And it also shows that doing all this work, छाकाणि त ही क़िस्म जो after studying तव्हां हिते इंडिया में पढ़िया, वरी पोइ वापस अमेरिका में भी कंटिन्यू कई क़िस्म जो रिसर्च ऐं स्टडीज़ requires a particular temperament, by continuous attention to detail, studies के
So how do you keep yourself motivated? Because on the other side, your job also is in a way very demanding, pay attention to detail. So apart from music, anything else that keeps you going motivated? Yeah, so I think you mentioned it very correctly. Pathology, especially surgical pathology, diagnosing cancer, it's a very precise, very finely tuned work which requires total attention to the task at hand. You cannot have any distractions at all. So, as I said earlier, music plays a big role in keeping me focused. And I play the kind of music where I don't have to pay attention to words. The classical music is a very good tool in that help in that regard. It's with regards to motivation. I think what keeps me motivated is the subject itself. जेका कैंसर जी जेका फील्ड आहे जी. It is so fascinating to me. Each case is different. Prostate cancer has certain common patterns, but each case shows me something unique, something new. And even though we associate cancer with all kinds of negative emotions and negative outcomes, there is certain degree of I don't want to use the word beauty, but there's certain degree of pattern and fascination in terms of how nature can go awry in certain situations, especially when I see in a specimen a focus of cancer right next to normal tissue. And I see the compare and contrast that this is normal and this obviously is cancer. I mean, it makes me wonder, okay, exactly what went wrong here that these cells became like this, and why are they looking different, and why are they behaving different? They are not respecting their boundaries. They are just dividing without any concerns for their surroundings. What motivates me is the subject matter itself. And to this day, I don't get tired of seeing prostate biopsy slides or bladder biopsy slides. And the other thing that has motivated me in this field is I have, even though my work involves prostate and bladder cancer, I am involved in teaching medical students and college students, and even some high school students who are interested in going to medical field later in life. And because of my interest in teaching, I have maintained a pretty large collection of teaching cases of cancers from all different organs. I have examples of brain cancers, I have examples of oral cancers, breast cancers, stomach cancers. त पोइ मां छा कयो आहे, उन्हनि जा जेके स्लाइड्स आहिनि उन्हनि खे मां माइक्रोस्कोप ते फोटोग्राफ करे उन्हनि जा जेके एग्जाम्पल्स आहिनि photographs of different cancers, not just how they look under the microscope, but even as a specimen once they are removed by the surgeon from the patient's body. The उन जा जेके specimen photographs आहिनि as well as जेके microscopic images आहिनि, उन जी मां हिकिड़ी website ठाही आहे. अच्छा. Which is now available. It's a free website, educational tool. It's called webpathology.com. Web pathology. Currently there are more than 14,000 images. Acha. That's a large collection. I keep adding, as and when I get time, I keep adding more images to it. And that is like my way of unwinding. It is my recreation, if you will. Yeah. Now that's creating a tremendous, what we will call in academic circles, a tremendous public good. Chakanta, you are creating that knowledge base and archive, accessible, open to everybody. I'm sure the link moklina podcast link mein vijandus, people can even explore that thing. There's a huge work. I'm reading a book called Moral Ambition by a Dutch writer who says, what is your moral ambition? Chakanta असां कम त कयूं था, पर असांजे कम जो ॿियनि ते केतिरो पॉज़िटिव असर थिए थो. जीअं हाणे तव्हां चैरिटी खणो त इट्स काइंड ऑफ हाउ मोरल एम्बिशियस यू आर, लाइक कहिड़ो कम था कयो था. सो इन अ वे दिस वर्क यू आर डूइंग इज एक्सपांडिंग द सर्कल ऑफ योर मोरल एम्बिशन. that okay, मां पंहिंजो प्रोफेशन में त ऑब्वियसली डायरेक्ट इम्पैक्ट थिए थो पेशेंट्स ते या मेडिकल प्रैक्टिस ते, प्लस देन यू गो टू स्कूल्स कॉलेजेस to inspire further students, and then on top of it you are also creating a third impactful activity to share that
collection of cases या knowledge जेको आहे to the community at large. So I think I'm just using that book name and applying it to you. Hopefully you don't mind using that adjective that you are morally very ambitious person. Yeah, in fact, it gives me a tremendous sense of satisfaction and professional accomplishment. And what has happened is because of the website, incidentally, it is being used, and this is based on the feedback I'm getting from various people around the world. It is being used, especially in less developed countries, developing countries where they don't have a lot of resources in terms of journals and books and so on. And it is being used by students there as a source of learning, which is, and they often send me very nice letters or Yes. emails through my website telling me how useful this has been. So it actually encourages me even more to put the material out there. And the other thing that has happened is based on the website, some of the retired professors in pathology have reached out to me that, hey, I have this collection of slides, it's just sitting gathering dust. You are happy to, I mean, I'm happy to give it to you if you're going to use it and if you want to put it on your. So in fact, a couple of the retired pathologists have sent out their life's collection. Wow. There was a retired pathologist from Iraq who used to collect cases, and he sent me more than 100,000 images. Now, I haven't had the chance to go through all of them, but as and when I get the time, I go through the images and selectively I put them on my website. So others have joined in this effort, and this collection is becoming quite useful. Yeah, and this is the fourth way of expanding your circle of moral ambition, because in a way you are infecting other people with the positivity of sharing. So and second motivation you mentioned there was the curiosity to know how life works, isn't it? That you find one tissue which is healthy, another which has become malignant. So how life works remains a wonder. And I am kind of a curious person. I read, although my professional experiences in economics, finance, but I'm fortunate to have interest in many other things. So currently I'm reading 2 books related to that curiosity, and they happen to be sitting here, so I'm just showing it. One of them is called The Arrival of the Fittest, where he talks about how the cells that arrived in the first place soon after 4.3 billion years ago when the life started. And the other one, which is also very fascinating, How Life Works, by Philip Ball, who was editor of Nature for 20 years. Oh, wow. Okay. So it's a fascinating book, and written for people like us who are lay people, So for you people, it will be maybe very simple thing to follow, but for us it is very curious. So that curiosity as a motivation itself is a tremendous thing. Dharam, what pleasure it is to talk to you about all these things. And I feel ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे जॾहिं महिल मां पंहिंजे सिंधी भाउरनि दोस्तनि सां मिलंदो आहियां जिन जो हेॾो वर्सेटाइल एक्सपीरियंस आहे ऐं हेॾो इम्पैक्टफुल लाइफ आहे. त इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कम्युनिटी में केॾी रिचनेस आहे. ऐं असां को स्पेशल कम्युनिटी न आहियूं. वी आर जस्ट नॉर्मल लाइक एनी अदर ह्यूमन ग्रुप. That is true. Yeah. पर अनफॉर्चुनेटली स्टीरियोटाइप थी वेंदो आहे न त भई सिंधी माण्हू ख़ाली हे वापारी कंदा आहिनि. त मां आई एम ट्राइंग टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप थिंग दैट वी आर नॉट जस्ट वापारीज. It's good to be Vapari. I'm very proud that people can survive in all circumstances. I actually have a small podcast I'll be doing on Sindhis can sell anything anywhere. So हिकिड़ो किताब आयो आहे उन जे बेसिस ते. तमामु सुठो. And last में हिकु ॿ question, Dharam, about anything that you recall from Sindhi culture, like कोई proverb आहे, चवणी आहे, saying आहे जेका तव्हांखे यादि हुजे, या कोई sentence जेको सिंधीअ में तव्हांखे यादि हुजे? Proverb चवणियूं त ऐं जेके पहाका जेके चइबो आहे, जी जी, वो actually I tried really hard. मूंखे कुझु ख़ासि ध्यान ते न आया, so I'm going to have to apologize for that. न पर जेको सिंधी culture आहे, ऐं one thing I would definitely want to mention, US में रही करे मां सिंधी कम्युनिटी जे वधीक कॉन्टेक्ट में न आहियां हिते रिचमंड में.
Richmond is a medium-sized town, and the Indian community काफी वडी थी वई है हाणे in the last 20 years since we have been here. पर सिंधी families अञा ताईं काफी घटि आहिनि हिते. मुंहिंजे ख्याल में हूंदियूं 10-12 families. And at which time we have come to know a few more. But in spite of not being in touch with Sindhi community, Sindhi families in the area, as time goes on, as I get older, मुंहिंजो जेको इच्छा आहे to recapture my Sindhi heritage has grown in my life. Okay. I want to learn more about Sindhi. I want to hear more Sindhi music. I want to talk to more Sindhi people. And I actually, after a long time, I'm having an opportunity to talk to somebody in Sindhi yourself. After a long time, मूंखे न त वधीक मौक़ो न मिलंदो आहे सिंधी में ॻाल्हाइण जो. मां जॾहिं बि इंडिया फोन कंदो आहियां पंहिंजे भाउरनि भेनरुनि सां ॻाल्हाईंदो आहियां त सिंधी में ॻाल्हाईंदो आहियां. कॾहिं कॾहिं इंग्लिश में बि ॻाल्हि थींदी आहे. पर that is the only opportunity I get. बाक़ी वधीक मौक़ो न मिलंदो आहे. त मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी त असां ॻाल्हाइण जो मौक़ो मिलियो. And it's such a wonderful opportunity. I hope we can stay in touch and वरी chat. ॻाल्हाईंदासीं हिकु भेरो सॼो म्यूज़िक जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं. उन मां हिकिड़ो तव्हांखे ॿुधायां, मुंहिंजी ॾाॾी चवंदी हुई जेको चुल्हि ते सो दिलि ते. Have you heard of that? Yes. उन जो मतिलबु आहे चुल्हि माना हॉब, कुकिंग हॉब बेसिकली, ओवन या स्टव. अॻु में त स्टव गैस न हूंदा हुआ त चुल्हि जेका चवंदी हुई मिटीअ जी चुल्हि ठहंदी हुई, हुन में कोयले सां ॿारींदा हुआ सिंधी में. मूंखे यादि आहे जस्ट बचपन में असांजे घर में गैस शुरूअ में न हूंदो हो त चुल्हि हूंदी हुई न. त चुल्हि त चवंदी हुई चुल्हि ते सो दिलि ते, माना जेको गॾिजी रहे थो हिक ई घर जे छत जे हेठां, त उहो जेको पासे में रहे थो, प्रॉक्सिमिटी जेका आहे उहो उन सां प्यार बि रहे थो हिकु क़िस्म जो. पर उन में कुझु वक़्तु कुझु सचाई हुई, छाकाणि त उन ज़माने में जेको चवंदा भई तमामु घटि माण्हू घर छॾे करे अलॻि रहंदा हुआ, त उन वक़्तु पर अॼोकी तारीख़ में अहिड़ो कुझु कोन्हे. कम्युनिकेशन जे करे तव्हां चओ था यू टॉक टू योर ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स, त उहो डिस्टेंस कोन्हे. पर उहो जेको मोहबत जो इज़हार करण जो हिकु तरीक़ो हूंदो, भई चुल्हि ते सो दिलि ते. हिकु पहाके जी मूंखे यादि अची, मुंहिंजे नानी बि चवंदी, ॾाॾी बि चवंदी हुई. ऐं मां ॾाढो फॉर्चुनेट हुउसि जो हुननि जे हथनि जा रोटी बि खाधी आहे मुंहिंजे ॾाॾी नानीअ जी. त हाणे लेट्स क्लोज विथ वन फाइनल क्वेश्चन धरम तव्हां सां हिन गुफ़्तगू खे. त you came through life, professional journey thi. Now if you were to look back 40-50 years ago when you were a young person, तव्हां जॾहिं 20 साल जा हुआ सम्झो, would you have done something different? Yeah, what would be advice to your younger self? In that context, I'm going back to the time when I had just finished higher secondary and decide करण जो time आयो कि हाणे मां कहिड़ी field में college वञा. त as I mentioned earlier, मूंखे वञिणो हो physics में, छाकाणि त मूंखे astronomy astrophysics में शौक़ु हो. त मुंहिंजे father जॾहिं मूंखे चयो कि न तूं medicine में वेंदे ऐं डॉक्टर थींदे, त I was quite depressed for a short period of time. I was very disappointed. I was despondent. I was not motivated to, go into medical field, at least for a short period of time. But then I somehow managed to say, okay, let me give it a try. So when your sister be encouraged, okay, medicine is such a wonderful field. You'll be helping so many people. It's a wonderful, noble profession. तो पोइ मां मन लॻाए पढ़ाई कई ऐं मेडिकल स्कूल में काफ़ी सुठी तरह सां पास बि कयो. त I think back to that time that what my father said made a lot of sense. And I look back at his advice and it made so much sense. So what I would tell my old self if I were to confront him is that, look, what elders advise you or what they tell you to do, it is not because it is something that motivates them or that is going to benefit them. It is for your benefit. They're looking out for your future. So don't dismiss the advice out of hand. Give it a try. Now, I think that has to be balanced with letting your children do what they are motivated to do. So
I am thinking of my own daughter. Now, I have one daughter. She is finishing college. Now, being in sciences myself in medical field, I encouraged her to go into sciences. She did really well in school in sciences in STEM courses. And she even started the college in the field of neuroscience. Right. But she is going to graduate with a degree in music industry. Wow. So she changed the course, and I was reminded of what I went through, and I took a different approach in this instance than what my father took with me. Yeah. I told my daughter, look, if music industry is what motivates you, go for it. Go for it. But give it all you have, work hard, make something out of it, but go for it. Yeah. Now, I was not able to guide her in the field because I know nothing about music industry. I know about music, Sindhi music and so on. But the music industry, as it happens in the US, I don't know much about that. So I could not guide her other than just encourage her to go all out. If that's what motivates her, fine with me, Yeah. So she's a performer, or she's kind of in a business in a sense? On the business side of music. Okay. I mean, promoting music. Yeah. So artist management, event management, contract management. Yeah, it's a business side of music industry rather than the artist side of it, kind of a thing. So she has got those business genes of Sindhis. Well, I guess so. We'll find out. Yeah, and I'm sure she will do proud to you and your father too. So it's such a different approach, isn't it? Socially, you looked at your father's advice. Even after all these years, you value that. And what has not changed is that you are also doing with good intention at your heart. Advice by this is my view, but of course now we say even children would react quite differently, isn't it? We can't. The times are different. Yeah. Yes, they are different generation, which is fine. We had to respect and खूबी आहे जेका असांजी कम्युनिटी में मूंखे वधीक ॾिसण ईंदी आहे भई थोरो इवॉल्व थिया आहिनि सोशली जीअं योर फादर्स आई मेंशन्ड अबाउट द गर्ल्स एजुकेशन इंक्रीजिंगली मां ॾिसां थो गर्ल्स एजुकेशन हैज़ बिकम वेरी इम्पॉर्टेंट कहिड़ी बि कम्युनिटी हुजे पर असांजे सिंधियुनि में बि हाणे जाम माना थिए थो पियो हीअ तमामु सुठी ॻाल्हि आहे सो with that advice to your younger self that you make good of what comes your way even initially it may look different to you and then get succeed in that by doing work and hard work and excelling. I think excelling is important in any field, isn't it? Yeah. So Dharam, so nice to talk to you today. Same here. Kuch chavan chahinda ॿियो कुछ before we close? No, but I think I was so delighted that I got this opportunity and I got to know you, and I will be keenly following your work on YouTube. You are doing a wonderful service to the Sindhi community at large by bringing, and I'm sure there is a lot of work that goes behind each podcast. It's not straightforward, even though it may look simple, but there's so much work that goes in editing and reaching out to people and spending the time and doing research and so on. Yeah. So I applaud you for doing that, and I'm really thankful for this opportunity. So thank you. It would not be definitely, possible. very ॻाल्हाईंदासीं. ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं ऐं टॉपिक कोई चूज़ कंदासीं जिते ॻाल्हाए सघूं था वो साइंस भी थी सघे थी कुछ भी थी सघे थो. And I would also like to give a shout out to my friend Deepak Ramchandani, who first introduced me in the first place to you. Yes, because he was the one who mentioned about you, and that's how we connected. Yes, so, and Deepak is doing great work. Deepak is doing great work. Actually, I plan to talk to him for this podcast because he has उन हिकिड़ो गांधीधाम जे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ठाहियो अथई काफ़ी फोटो जमा कया अथई पुराणा गांधीधाम जा. Yeah, actually I have seen that. Yeah. हा त कोशिशि कंदुसि मां उनखे हिकिड़ो पॉडकास्ट में खणी अचां मे बि 2 या 3 ॼणा गॾिजी करे ॻाल्हाईंदासीं हुन पॉडकास्ट में गांधीधाम जे बारे में छाकाणि गांधीधाम हिकु स्पेशल प्लेस आहे. काफ़ी माण्हुनि खे ख़बर न हुजे त गांधीधाम में गांधी समाधि बि आहे. गांधी जी 2 समाधि आहिनि सभिनी खे दिल्ली वारी समाधि जी ख़बर आहे पर गांधीधाम में हिकु ॿी बि समाधि आहे गांधी जी कुझु अवशेष खणी आया हुआ हुते
अच्छा उनजा हाँ, जेके हुआ त गांधी समाधि जेका आदिपुर पे आहे उहा त सेकंड समाधि ऑफ गांधी yeah, yeah. त स्पेशल प्लेस आहे मुंहिंजे हार्ट में बि बिकॉज़ माय वाइफ कम्स फ्रॉम देयर आई गो देयर फ्रीक्वेंटली मां हुते कमु कयो आहे तोलाणी सां तोलाणी कॉलेजिस में so अच्छा, yes someday we'll bring Deepak into the conversation as well definitely, thank you definitely. Dharam for talking Thank to me you, today thank you. thank All you right. महिरबानी उमेद त तव्हांखे डॉक्टर धरम रामनाणी सां हीअ गुफ़्तगू पसंदि आई हूंदी ऐं तव्हां हिन सिंधी ॿोली उताक पॉडकास्ट खे ॿुधंदा रहंदा जेकॾहिं तव्हां ऑडियो में ॿुधी रहिया आहियो त सब्सक्राइब कयो ऐं यूट्यूब ते ॾिसी रहिया आहियो तॾहिं बि सब्सक्राइब कयो ऐं ॿियनि ताईं बि पहुचाइण जी कोशिशि कयो उहा तव्हांजी मदद थींदी ऐं तव्हांखे जेकॾहिं कुझु राया हुजनि हिन गुफ़्तगू जे बारे में या सिंधी ॿोली उताक जे ॿियनि पॉडकास्ट जे बारे में त तव्हां ज़रूरु यूट्यूब ते कमेंट करे सघो था